Hi. So today's video is for you if you have appeared for the first few mocks in the test series in your preparation for this year's CAT and your scores haven't been particularly good. So if you're feeling a little despondent, lost, in a mode that almost feels like you want to quit, और बहुत हताश हैं, निराश हैं, बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. Alright, so let's assume you're watching this having had a string of poor scores in your mocks. Now there are two possible reactions you could have to it. One is the most natural one, the more common one, that is of disappointment, severe, feeling of wanting to give up, or you're beginning to believe कि मेरे तो बस का नहीं है ये, जो भी तैयारी अब से पहले क्लासरूम में की थी या सेक्शनल्स दिए थे या कुछ और प्रैक्टिस टेस्ट किए थे, उनमें तो स्कोर फिर भी ठीक आता था, लेकिन जैसे ही मॉक शुरू हुए हैं इट लुक्स कि आपके लेवल से ऊपर का ये गेम है. एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर, इट इज नेचुरल. दैट इज हाउ मोस्ट पीपल फील. सो दिस फीलिंग ऑफ severe or extreme disappointment or this urge from within, this is probably right next year's CAT, or this is not my cup of tea. If that's how you're feeling, as I said, there are two things to it. One is that it's the most common, most natural reaction for most people. तो आप अकेले नहीं हैं, और इन्हीं ऐसा महसूस करने वाले लोगों में से ही बहुत सारे लोग इस साल एक दफा फिर से उसी कैटेगरी से बहुत सारे लोग टॉप 20 स्कूल्स में जाएंगे. आईएम्स में जाएंगे, एफएमएस में जाएंगे, एक्सएलआरआई में जाएंगे, एमडीआई में जाएंगे, एसपीजेन में, आईएफटी में, नरसी मोहन जी में. whatever the top 20 schools are, a good number of students feeling so dejected and disheartened today will make it to these schools. It happens every single year. In fact, I'll link to this video, probably a playlist of students who had very poor scores somewhere early or in the middle of their mock test series, the AirCAT series at MBA Guru, but finally they made it to top B schools. Some of them in fact have on camera said कि पहला mock दिया and after that I went crying, almost in tears, and met this faculty because I felt this is not something that was within my ability or grasp, and these people made it to the top B schools. So reaction is natural. अगर ऐसा आ रहा है, लेकिन उसके पार जाके ही आप कुछ कामयाबी को पा सकते हैं. If you just think about anything worthwhile that you've done or learned in your life, starting from when you were a kid. Now don't tell me when you were a kid you were mentally stronger than what you are today, because factually if you look at it, as a kid when you started walking, you have no idea of the number of times you fell, but every single time you got up. In fact, if no one was looking, you probably didn't even cry. You just brushed your hands and knees and just walked on like as if nothing had happened. And if someone was paying attention, probably you threw a few tantrums and then got up and started walking again. तो अगर उस वक्त आप अपने अंदर से किसी भी टेम्परेरी फेलियर को पार पाने की क्षमता ला सकते थे बाहर, तो कोई वजह नहीं है कि आप आज के दिन ऐसा नहीं कर सकते. You can just dig deep inside and bring that fighting spirit to the fore. That all right, I've done badly, I've met a temporary failure, पर यहाँ से तो कुछ अच्छा ही हो सकता है. See, the best thing about failing and failing big is things can only get better from there. You can look at it in any sphere of life. A player who's done badly for a number of times, probability-wise, his or her day is about to come. If you look at, let's say, when the stock market has really crashed, what are most people doing? They're panicking. Lekin that's when bottoms are made. That's when things can only get better because they've been so bad. So first of all, if it's so bad, you need to figure out, whether today you're stronger than what you were as a small kid, and you can get up, you can get that spirit going, and you can understand कि यार यहाँ से तो चीजें और बेहतर ही हो सकती हैं, right? So that is the second reaction that you can possibly choose. That is one of a very practical understanding,
okay, this is bad, this was bad, below what I expected, and I'll have to do something to change it, but let me take it one step at a time, right? That is the best approach. So if you can just figure out, okay, इन मॉक्स में मैंने एक दो बड़ी गलतियां की और मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी कि अगले मॉक में मैं ये वाली एक मिस्टेक या ये वाले दो बड़े ब्लंडर्स अवॉइड कर दूंगा या कर दूंगी, एंड दैट इज व्हेन आई विल स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट. A very important thing to understand is that momentum works both ways. जब आप कुछ improvement शुरू कर देते हैं तो improvement creates a momentum that gets you further improvement and so on. It's not just that you improve and you stop at that stage. You begin to gain confidence. Okay, whatever I am doing is working. So I know I can do it. So when you take 2 steps, you get the confidence to take 4 more steps and the confidence to take 10 more steps and so on. So you don't have to worry about कि आपके सामने जो पहाड़ है वो कैसे पार पा पाएंगे आप, कैसे उसके ऊपर उसकी ऊंचाइयों को, उसकी बुलंदियों को छू पाएंगे आप. आपको बस ये देखना है कि आपके बिल्कुल सामने जो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको चलने हैं या चढ़ने हैं, हाउ कैन यू डू दैट, बिकॉज वंस यू डू दैट यू गेन द कॉन्फिडेंस टू कीप गोइंग. So it's important that choice is simply yours. आप बिल्कुल गिव अप मोड में आके और ये सोच सकते हो मेरे तो बस का नहीं है. ऐसे भी बहुत हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, कैट की तैयारी में भी होते हैं और जिंदगी के हर क्षेत्र में होते हैं ऐसे लोग जो मुश्किलें आने पर गिव अप कर देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो डट के सामना करते हैं और जो बोलते हैं यार ये अब तो मजा आएगा. एनीथिंग वर्थ अचीविंग is going to take some doing. वो कोई प्लेटर पे रख के तो आपके सामने नहीं आएगी. उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. You'll have to get past a few challenges. That is all that these mocks are. If you're taking the scores of these mocks too hard and letting that decide, अगर आप असली इम्तिहान से इतना पहले अपनी तैयारी में आई हुई किसी नाकामयाबी को डिसाइड करने देंगे कि आप लाइफ और करियर में क्या करने वाले हैं, then God help you. In fact, I'd say even God can't help you. दूसरी तरफ अगर आप इसको एक लेसन की तरह, एक चैलेंज की तरह लेते हैं और कहते हैं कि चलो शुरुआत ऐसी हुई है, यहाँ से तो अब मैं अच्छा ही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. आई एम बीइंग वेरी जेंडर सेंसिटिव हियर इन हिंदी. आई एम अबाउट टू डू मच बेटर देन हियर. Then there is very little that can stop you from excelling. That's how I see the stories unfolding every single year. There are students, thousands of students in the exact same spot as you are today. And when you'll go to a top B school, when we'll probably be requesting you to make a video to inspire others, and when we'll talk about whether at any point during your preparation you felt like giving up, ये वाले मौके याद रखना. और जब आप उस शिखर पे चढ़ जाएंगे और देखेंगे कि अरे इतनी नीचाइयों पे ही मैं हार मान रहा था या मान रही थी, तो आप बहुत सारे और लोगों को अगले साल हौसला देंगे ऐसी मुश्किलों को पार पाने का. सो द डिसीजन इज योर्स. which reaction do you choose? Extreme despair या फिर I'm gonna do it? Let me know in the comments which is the reaction that you will choose. That's it for now. See you soon in another video. Bye bye. Take care.